What is MCAT? What is the advantage of taking the test? How is it going to help me find a job? Is it a company specific test or a generalized test? What is the exam pattern? How much score do I need to qualify? What is the algorithm? How is the test evaluated? Where to prepare from? And are there any tips and tricks to crack MCAT? And if yes, what are they? If you too are wondering the same, let me assure you that आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, and by the end of this video you will have your answers. So keep watching this video till the end. Hey guys, welcome back to my channel Mostly Programming. My name is Vivek and I welcome you to yet another episode of Mostly Programming Presents Placement Talkies. In today's video, we are going to talk about AMCAT. So what is AMCAT? AMCAT stands for Aspiring Minds Computer Adaptive Test. Aspiring Minds is the company that conducts this test to measure your EQ. Now you may wonder, why does a company want to measure an employee's EQ? So EQ here does not stand for emotional quotient. Instead, it stands for employability quotient. So this is a test conducted to measure your EQ. Now what do we mean by adaptive here? Adaptive का शुद्ध हिंदी में मतलब है अनुकूल. I know बहुत ज़्यादा हिंदी हो गया, तो इसको layman terms में अगर मैं आपको explain करना चाहूँ तो adaptive का मतलब है something that changes its behavior or adapts the situation. In simple terms, we can say that something is adaptive when it changes its behavior according to the situation. अब ये क्या है भाई? तो ये पूरा का पूरा एल्गोरिदम है which I would be explaining you a little later in the video, but जो आपकी क्यूरियोसिटी अभी जागी है उसको मैं थोड़ा शांत करने के लिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ टू अंडरस्टैंड व्हाट एडेप्टिव मीन. सपोज यू आर टेकिंग द एमकेट टेस्ट और आपने आपका टेस्ट स्टार्ट कर दिया एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आया, अब दो सिचुएशन है, या तो आप वो क्वेश्चन सही से आंसर कर रहे हो या आप गलत आंसर कर रहे हो, राइट? अगर आपने सही आंसर किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी अ डिफिकल्ट वन. अगर आपने गलत आंसर किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी एन इजी वन. तो अभी आप सोच रहे होगे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन गलत कर देता हूं, उसके बाद मेरे पास इजी इजी क्वेश्चंस आएंगे. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने सही आंसर किया देन यू वुड बी गेटिंग अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट द वेटेज ऑफ दैट क्वेश्चन वुड बी मोर. मतलब आप अगर उसको भी सही करते हो तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. सिमिलरली अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन गलत किया, मतलब उसका आंसर गलत दिया, एंड सेकंड क्वेश्चन इजी आया और आपने वो सही किया तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे. सो ये पूरा का पूरा एल्गोरिदम है. वी वुड बी सीइंग दैट अ लिटिल लेटर इन द वीडियो. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग द एमकेट टेस्ट? इट हेल्प्स यू गेट अ जॉब. इज इट फॉर engineers only? No, it is not just for the engineers. Any graduate can apply. Science, even MBA can apply, right? So how does it help you get a job? You take the test, you qualify the test, and then you would start getting interview calls. And then you will have to go through the interview process for that company. Talking about companies, are good companies registered on AMCAT? Yes, over 700 plus companies are registered on AMCAT. Companies like Cognizant, Mphasis, Mindtree, Genpact, and many more companies are registered on AMCAT, and they hire their employees through AMCAT. Is it a company specific test or a generalized test? अब यहाँ पे दो situations हैं. First scenario would be you are going to the AMCAT platform and registering yourself for a test. ये तो हो गया सिचुएशन नंबर वन, सिनेरियो नंबर वन, दैट यू आर गोइंग टू द एमकैट प्लेटफॉर्म. एमकैट की आप साइट पे जा रहे हो एंड देन यू आर रजिस्टरिंग फॉर अ टेस्ट योरसेल्फ, राइट? सो दूसरा सिचुएशन क्या हुआ? यू आर अप्लाइंग फॉर अ कंपनी, से यू आर अप्लाइंग फॉर कॉग्निजेंट एंड कॉग्निजेंट इज मेकिंग यू टेक द टेस्ट. सो दोनों सिचुएशंस के लिए आपके पास, दोनों सिनेरियोज के लिए आपके पास अलग अलग चीजें हैं. सो विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. Scenario 1 would be you are going to the AMCAT website and you yourself are registering for the AMCAT test. तो उस सिनेरियो में क्या होगा? पहली चीज, you will have to pay the exam fee which varies.
It is from 700 to 1500 depending upon the number of modules it vary. So सबसे पहली चीज तो है if you are yourself taking आपको एग्जाम फी पे करनी पड़ेगी, राइट? दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे एडवांटेजेस हैं कुछ, तो आप नंबर ऑफ कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो इफ यू क्वालिफाई द टेस्ट. अब आपने टेस्ट दिया, आपने एमकैट का टेस्ट दिया, आपको वो लोग एक पूरा सर्टिफिकेट देंगे विद योर स्कोर कार्ड और उसमें एक डिटेल्ड फीडबैक एनालिसिस होगा. उसमें क्या होगा दैट आपको बताया जाएगा कि आप किन डोमेन्स में इंप्रूव कर सकते हो, राइट? तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है इफ यू आर योरसेल्फ गोइंग टू रजिस्टर फॉर द टेस्ट. सेकेंड थिंग इज कि आपको डायरेक्ट अभी टेस्ट आपने दे दिया, उसके बाद इधर यू कुड बी गेटिंग डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल्स फ्रॉम द कंपनीज जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है, और आप खुद भी नंबर ऑफ कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर स्कोर. अब क्या स्कोर की वैलिडिटी लाइफ टाइम है? नो. वंस यू टेक द टेस्ट, जब आपका रिजल्ट आए उसके बाद दैट स्कोर इज वैलिड फॉर 1 होल ईयर. तो 1 साल में आप किसी भी कंपनी में जो एमकैट के थ्रू हायर कर रही हैं आप अप्लाई कर सकते हो. नाउ व्हाट इज द टेस्ट पैटर्न फॉर सिनेरियो 1? ये यहां पे थोड़ा ट्रिकी पार्ट है. दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन इफ अ कंपनी इज मेकिंग यू टेक द टेस्ट और यू आर योरसेल्फ टेकिंग द टेस्ट. सो टेस्ट पैटर्न फॉर एमकैट फॉर सिनेरियो 1, we can divide the modules in 2 parts. Number 1 would be the compulsory modules and number 2 would be the optional modules. अब इसको थोड़ा डिटेल में समझना है तो धीरज से सुनिए. So there are 6 compulsory modules. Number 1 being the English or verbal ability. Number 2 would be quantitative ability. Number 3 would be quantitative ability tech. Number 4 would be logical reasoning. 5 would be AMPI, which is the aspiring minds personality inventory, which is the personality test. And number 6 is information gathering and synthesis. Now these are the 6 mandatory modules that everyone who applies for AMCAT is going to have these 6 modules for sure. These are like the mandatory modules, the compulsory modules. Now let's see how many questions do we have in these modules. For English, we have 18 questions to be done in 16 minutes. For quantitative ability, we have 14 questions to be done in 20 minutes. For quantitative tech ability, we have 16 questions to be done in 20 minutes. There is a very little difference between the two. Then in reasoning, we have 16 questions to be done in 16 minutes. In the AMPI test, the personality, we have 90 questions to be done in 20 minutes. And in the last module of the compulsory section, not the whole AMCAT test, we have 15 questions to be done in 20 minutes. So that's about the compulsory modules. We are going to discuss about the exam syllabus, the test syllabus a little later. For now, you just need to understand that we have these 6 modules, namely we have the English verbal ability, then we have the quantitative ability, the quantitative tech, then we have logical reasoning, then we have AMPI, and we have information gathering and synthesis. These 6 are the compulsory modules. Now let's talk about the optional modules. So the optional modules are not same for everyone. These are domain specific. Like if you are from MBA, आपके लिए MBA वाले optional modules होंगे. If you are from CSE, आपके लिए CSE वाले होंगे. Electronics के लिए electronics वाले, and for mechanical and so on, you know the drill now. So ऑप्शनल मॉड्यूल्स कितने सिलेक्ट कर सकते हैं हम? वी कैन सिलेक्ट अप टू 2 ऑप्शनल मॉड्यूल्स. फॉर एग्जांपल मैं सीएससी के लिए अगर आपको बताऊं तो यू आर गोइंग टू हैव 2 ऑप्शनल मॉड्यूल्स व्हिच वुड बी ऑटोमेटाफिक्स एंड द कंप्यूटर साइंस सेक्शन. In the automata-fix section, there are going to be 7 questions to be done in 20 minutes, and in the computer science section, there are going to be 20 questions to be done in 20 minutes. Now, what are these questions exactly going to be? We will discuss a little later. So that's all about scenario 1, जहाँ पे आप खुद जाके AMCAT के प्लेटफॉर्म पे टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे. Right. Let's talk about scenario 2. When you are applying for a company and that company wants you to take the test. तो उस सिनेरियो में क्या होगा? वेरी फर्स्ट थिंग, यू वोंट हैव टू पे फॉर द टेस्ट. देन सपोज आप कॉग्निजेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कॉग्निजेंट में आपने जैसे अप्लाई किया, उसके बाद दैट कंपनी वुड बी सेंडिंग यू एमकेट क्रेडेंशियल्स, लिंक आएगा, आईडी पासवर्ड आएगा, तो यू विल हैव टू टेक द टेस्ट. तो आप सोचेंगे कि वो तो बेटर है कि कंपनी के लिए अप्लाई कर दो. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. तो अगर आपने
एक कंपनी से कॉग्निजेंट के लिए अप्लाई करा एंड दे मेड यू टेक द टेस्ट, तो पहली बात तो आपको स्कोर आपका नहीं पता चलेगा, यू वॉन्ट गेट योर सर्टिफिकेट, आपका स्कोर कार्ड आपके पास नहीं आएगा. दूसरी चीज, इफ यू क्वालिफाई द टेस्ट, कॉग्निजेंट विल कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू. That's okay. That's as per our plan. We want that. We want companies to call us for interviews. But you won't be able to use that score. That you won't be tell anyone that you have qualified MCAT. मतलब दूसरी कंपनीज में आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो विद दैट MCAT स्कोर, क्योंकि आपके पास स्कोर कार्ड ही नहीं है. तो दैट इज द मेजर डिसएडवांटेज किसी कंपनी के थ्रू MCAT देने की. अभी जो चीज है कि टेस्ट पैटर्न सिनेरियो 2 में कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा. मैंने जब कॉग्निजेंट के लिए अप्लाई करा था, आई गॉट द टेस्ट लिंक, तो वहां पे क्या मॉड्यूल्स थे, आई हैड 4 मॉड्यूल्स. नंबर 1 वाज द इंग्लिश, नंबर 2 वाज लॉजिकल, नंबर 3 वाज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड नंबर 4 वाज ऑटोमेटा फिक्स. सो आई हैड ओनली 4 मॉड्यूल्स. तो वो कंपनी टू कंपनी पैटर्न वेरी करेगा. नाउ कॉग्निजेंट हैज चेंज्ड देयर पैटर्न. तो अभी क्या है, इंग्लिश, क्वांटी, लॉजिकल, देन वी हैव द ऑटोमेटा फिक्स, देन वी हैव कोडिंग राउंड 1 और कोडिंग राउंड 2. इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं. तो देखते हैं कि कॉग्निजेंट ने क्या चेंजेस किए हैं एंड क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी के लिए सेम रहते हैं. नो, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट सेम. So I was telling you about Cognizant's MCAT test pattern. So when I gave the test, I took the test, then there were only 4 modules. English, I believe 18 questions to be done in 22 minutes. Then we have quantitative, 24 questions to be done in 35 minutes. For logical, 25 questions in 35 minutes. And automata fix, 7 questions in 20 minutes. And that's it. But Cognizant has recently changed the exam pattern, and now it has single question in English, and then the quantitative and everything is same. For automata also it is same, but they have introduced 2 new modules, which is coding round 1 and coding round 2. In coding round 1 you would be getting 2 coding questions and you will have to solve that in 40 minutes, and if you qualify that, in the coding round 2 you will be getting 2 questions again, but you have 80 minutes to solve that. So that's how the MCAT pattern vary from company to company. विप्रो में देयर इज अ डिफरेंट पैटर्न. वहाँ पे ये मॉड्यूल्स कुछ सेम है, बट वहाँ पे आपको ऑटोमेटा फिक्स नहीं मिलेगा. वहाँ पे आपको सिर्फ एक कोडिंग सेक्शन मिलेगा वेयर देयर वुड बी 2 क्वेश्चंस और आपको वो सॉल्व करने होंगे इन 60 मिनट्स आई बिलीव. सो ये था एग्जाम पैटर्न, कैसे डिफरेंशिएट है सिनेरियो 1 व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई योरसेल्फ, और दूसरा जब आप कंपनी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, मतलब कंपनी आपको टेस्ट लेने को बोल रही है. So that's it for this video. I shall see you next time. Bye bye, take care. And if you want me to help you out with the AMCAT test, you can reach out to me on my social media handles. My Instagram link, my LinkedIn profile link, all are available in the description, as well as you can see them here on the screen. So reach out to me, I'll personally help you out. Bye bye, take care, and please video share कीजिए.